everyone, and welcome back to Shubhangi Coding in Magical World. So today is our scratch session, as you all know, and as you have just noticed the thumbnail. Today we are going to learn how to create a translator on Scratch. Okay. So let's get started without any further delay. सो जस्ट मैंने स्क्रैच ओपन कर लिया है, प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया एंड सी जिसमें स्प्राइट्स भी बनाए. तो स्प्राइट्स में भी कुछ नहीं है, ये बहुत सिंपल स्प्राइट्स है जो मैंने बनाए हैं. बैकड्रॉप बस मैंने ग्रेडियंट कलर दे दिया है. एक इटालियन थीम का स्प्राइट बनाया है. जितने भी लैंग्वेजेस के ट्रांसलेटर मुझको बनाने हैं तो उनके मैंने जो है टेक्स्ट में पुट किया है, जो कि मैंने कॉस्ट्यूम से जाकर भी कर लिया. इजीली आप लोग भी कर सकते हो. ये टेक्स्ट मैंने यूज किया है जो कि आप सबको पता है. एंड मैंने जस्ट इसका जो स्प्राइट का नेम है वो चेंज किया है. एंड दिस इज टू सिंपल, यू कैन जस्ट डू इट. ओके, so now let's do the code. Okay, so now we're going to do the code for it. So see, so when this sprite is going to get clicked, I wanted to ask what you want to translate. Okay, I want to just ask that what you want to translate, what you want to translate. Okay, what you want to translate, and then question mark. And after that, you have to just come up here and you have to just take the extension of text to speech and also of the translate. Okay, so here I'm gonna just set the language to this, the Arab, sorry, yeah, Italian. And I would like to just speak. Okay, I would like to speak. Okay, speak, translate. So let's take this block. Translate answer to Arabian. Sorry, Italiano. So Italian. Not Arab. Okay. Answer. Okay, answer. And also I would like to just see, so we are done. Okay, we are just done. Like अगर मैं इससे टाइप करती हूँ, हमने अपने इटालियन के लिए जो है पुट कर लिया है कोड. जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, ये मुझसे पूछा क्या मुझे ट्रांसलेट कर दो. मैं शुभांगी अगर लिख दूँ देन जस्ट गिव मी अ सेकेंड. लेट मी जस्ट अनम्यूट दिस साइड. मैं जस्ट म्यूट कर दिया सर, इसलिए वर्क नहीं करेगा. यहाँ पे मैं अगेन शुभांगी को टाइप करती हूँ. शुभांगी. आई डोंट नो जस्ट मेरा नाम शुभांगी, बट ये रॉन्ग नहीं प्रोनाउंस कर लेता है. तो यहाँ पे मैं एक बार आती हूँ गूगल पे एंड मैं टाइप करती हूँ इंग्लिश टू इटालियन ट्रांसलेशन. तब यहाँ मैं शुभांगी को अगर टाइप करने वाली हूँ, ओके देन ये सेम ही नेम है शुभांगी. ओके, जस्ट ये नेम थोड़ा सा मेरा वियर्ड स्पीकर है, बट दैट्स ओके, राइट. सो लाइक दिस ओनली. अगर मैं जस्ट हेलो का देखती हूँ क्या होता है, तो यहाँ पे मैं एक काम करती हूँ कि यहाँ पे मैं हेलो टाइप करके बस टेस्ट कर लेती हूँ. Ciao. ओके, सो दैट्स करेक्ट. आफ्टर दैट सेम कोड होगा बाकी वर्ड्स के लिए, सेम कोड होगा. तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें दूसरे लैंग्वेज पे आना होगा एंड सेम थिंग को पुट करना होगा. व्हेन दिस इज स्प्राइट क्लिक्ड, ask what you want to translate. Okay, well, let's try to do just okay, and let's try to put them in all.
Okay, let me just try to put it. Okay, let's see if this will work. Okay, that's working. Okay, so this is a great trick. Okay, I'm gonna just put that. Okay, so let's see if it's done. ओके आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई और भी ब्लॉक है अच्छा है जस्ट मैं माइनस जूम आउट करके चेक कर लेती हूँ तो इसे मैं रिमूव कर देती हूँ यहाँ से क्योंकि मुझे इसका कोई ज़रूरत नहीं है राइट तब यहाँ पे आते हैं सो व्हाट यू वांट टू ट्रांसलेट सेट द लैंग्वेज टू दिस आई थिंक यही है हाँ ये एंड लैंग्वेज यहाँ से भी सिलेक्ट कर लेते हैं आप ये उसके बाद अरेबियन के लिए भी सेम ही है राइट और सॉरी अरबिक में बार बार अरेबियन अरेबियन कह रही सॉरी अब टर्किश लैंग्वेज है आई डोंट थिंक Turkish is there. Yeah. Okay, so Turkish. After that, the Japanese. So Japanese में I think नहीं है. कोई नहीं मैं put कर देती हूँ यहाँ पे. ठीक है. तो यहाँ पे अब choose कर लेते हैं. Japanese. Okay, where is the Japanese? Here. Japanese के बाद और नेक्स्ट लैंग्वेज है फ्रेंच ठीक है तो फ्रेंच के लिए ओके जस्ट नहीं हाँ ओके तो अब मैं सेट दी लैंग्वेज टू फ्रेंच करती हूँ ठीक है फ्रेंच दिस ऑल्सो टू फ्रेंच yes and see let's try to use a save block also here save the answer so let's try this again okay oh hello Ciao. that's not working okay let's try this okay Italian okay so set translate answer to Italian okay just try करते हैं I hope ये work करे okay just work हो रहा और leave it I think मैंने wrong thing put किया just leave it okay so see तो यहाँ पे मैंने कितना तक कर लिया या मैं फ्रेंच तक कर लिया फ्रेंच के बाद अब कौन सा लैंग्वेज है फ्रेंच के बाद और ये कहाँ गया okay just give me a second
Okay, this one. After that, the Chinese is here. This language. Okay. After that, the Spanish. And after that, English. So just give me a second. ओके सर लैंग्वेज को इंग्लिश कर देते ठीक है सो द लैंग्वेज विल बी इंग्लिश ओके so after this English the next one is Korean right so let's put that okay so the language is Korean right okay so it's Korean okay after that the German so it's German language so let me just put it right down here also okay so the language is going to be German right now okay so if you want you can make it for the Hindi as well just मैंने 9 लैंग्वेजेस ही ऐड की हैं आप और लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हो ओके ओके तो हम लोगों so we are ready so we are done by making the translator on scratch so this is how you can create the translator and just मैं शेयर बटन पे क्लिक करके इसे शेयर कर देती हूँ ठीक है तो आप जैसे इस पे क्लिक करते हो आपको अब इसके ऊपर का जो लिंक है वो कॉपी करके मुझे स्क्रैच डाउट में सेंड करना ओके एंड ये आपका होमवर्क है एंड आपका होमवर्क है कि आपको और लैंग्वेजेस को ऐड करना है so thanks for watching guys I hope you enjoyed if you enjoyed then don't forget to like share and subscribe and don't forget to join the Discord if you haven't joined till now and if joined then that's great okay if you haven't joined then you need to join it okay because for so many important things you need to join so thanks for watching guys see you soon